everybody. Hello my dear kids. How are you utilizing your quality time? I hope you are utilizing it in some constructive way. Today again I am here to give you some interesting assignment. I welcome you all in this special session of rules of divisibility. This rules of divisibility I have divided into two parts. In first session, I will take the divisibility rules of 2, 3, 4, 5 up to 11. And in second part, I will discuss 13, 17, 19, 23 and 29 means prime numbers. So be with me for this important session. The rules of divisibility are very important because these rules will help the kids and even to all to look at the numbers with greater ease and to understand the build of the numbers. I know that there are many shortcuts and tricks in mathematics which helps the students to calculate faster and to develop mathematical skills. But always remember, there are certain stages to introduce the rules, because in every stage you cannot understand the rules. But however, if I talk about this rules of divisibility, a child can understand from very small age. A small kid, like a kid of class 2nd and 3rd, can understand even number, odd number and all that. So I believe that all the children should understand and be exposed to the rules of divisibility as early as possible, maximum up to the age of class of 4th or 5th, because these rules will help the students not to afraid of large numbers. In these classes, if we go from 4th or 5th, from 3rd to 4th, 5th, children have to use greater numbers like 4-digit number, 5-digit number. They have to use. Or many times they are afraid of the numbers because they are very great numbers. So these rules will take out that fear from the children. And secondly, if I say that the rules of divisibility will make the understanding of build of the numbers, mean how can a greater number be built, how they can make a greater number. That concept also they understand with the help of rules of divisibility. And one more very important thing, these rules make children feel comfortable and flexible to working with the numbers. So lastly, I say that if your child is not exposed to the rules of divisibility, I highly suggest you to tell your child, to teach your child all the rules of divisibility. So now I am starting. At first, let me start with the rules of divisibility of 2. All of us, we know this. What are the rules of divisibility of 2? सबसे छोटा नंबर है 2. All even numbers are divisible by 2. All even numbers क्या होते हैं? जिनके पीछे क्या होता है? Last digit 2, 4, 6, 8 और 0. 2, 4, 6, 8 जिन digits के, जिन numbers के last में होगी, वो नंबर होंगे even number. Like I can write 62, 64, 98, 100 and so on. These are the numbers divisible by 2. Divisibility rule of 3. Sum of the digits is multiple of 3. If sum of the digits of a number is multiple of 3, then the numbers will be divisible by 3. Like, see, let me write. If I write 1, 2, 3, add these numbers. 1 plus 2 plus 3. How much? 6. 6 is divisible by 3. Again, I can take another example. 4, 9, 4, 5, 4, 6. This number 5 plus 4 plus 6. This is 15. 15 is divisible by 3. So this number is divisible by 3. Next is divisibility rule of 4. Divisibility rule
rule of 4 is very important. If last two digits of a number, say up to 100, we can easily divide by 4. But more than 100, if the number is greater than 100, then what will be the rule of divisibility? If the last two digits of the number are divisible by 4, then the number will be divisible by 4. Like, let me write, suppose I write 112. This 12 is divisible by what? 4. And let me write, suppose I write 996. 96 is divisible by 12. And if you don't know, so you can try it. Similarly, I can write a larger number. I can write 1, 2, 5, 6, 4. 64. Last two digits 64. So this is divisible by what? This is divisible by 4. Divisibility rule of 5. The divisibility rule of 5 is the last digit of the number is either 0 or 5. I can write 110. Last digit is 0. I can write 225. Last digit is 5. If there is any other digit, like suppose 119, if there is any other digit except 0 or 5, the number will not be divisible by 5. So this is very, very important. Now I will discuss more. Divisibility rule of 6. Any even number which is divisible by 3. Very, very important. Any even number which is divisible by 3 will be divisible by 6. Look here, I have written 528, and definitely this is even number. I can check the last digit in units place. Add these two. This is what? 5 plus 2 plus 8. How much is this? 15. 15 is divisible by 3. So 15 will be divisible by 6. Let us take another example. Second example is 2154. I have written 2154. Add these two. 2 plus 1 plus 5 plus 4. How much is this? This is, I think, 3, 8, 12. 12. Yes, definitely. 12 is divisible by 3. So means what you have to check? You have to check whether this is even number or not. That is very easy. The digit at units places what? 0, 2, 4, 6, 8 will be divisible by 2. Now check the divisibility of 3. Find out whether the number is divisible by 3 or not. If the number is divisible by 2 and 3 both, 2 and 3 means it is even and divisible by 3. So it will definitely be divisible by 6. Now the very important rule, divisibility rule of 7. This is very important. See, double the last digit. Last digit कौन सी होती है? The digit at units place. ये 8. Double the last digit. ये 8 है. इसका डबल करना है. Double the last digit and subtract it from the remaining leading truncate number. जितना बच गया उसमें से subtract कर देना है. किसको? इसका डबल. Like I have written, I will take that also. मैंने कुछ examples लिए हैं. 600 ये लिया है. 672 को I can check. 67 minus 2 into 2. I said double the last digit. The digit at units place. इसको करना है डबल. ये डबल हो गया. अगर इसको डबल करेंगे तो this will become 4. 67 minus 4 is 63. Definitely 63 is divisible by what? 7. So this number is divisible by 7. Another number, any number you can check. And let me check 528. क्या करना है? 52 minus 2 into 8. What is this? 52 minus how much? 16. 52 minus 16. You can subtract it. इसे subtract करेंगे तो कितना आ जाएगा ये? 52 minus 16 is 32. 32 is not divisible by 7. 32 7 से divisible नहीं होता है. 32 है. This is not divisible by 7. तो ये number 7 से divisible नहीं है. ये these divisibility rule of 8.
look here, last three digit number, last three digits of the number formed by the last three digits is divisible by 8. See, divisibility rule of 4 क्या था? If last two digits, हम divisibility rule of like this number I have written 1 2, इसके लास्ट टू में क्या है 12. अगर 12 4 से डिविजिबल था तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाता है. अब 8 के लिए हमें क्या करना पड़ता है 512, लास्ट थ्री डिजिट्स को चेक करना पड़ता है वो कितना ही बड़ा नंबर. लेट अस चेक द लास्ट थ्री डिजिट. अब 512 इज डिविजिबल बाय 8. ये डेफिनेटली 8 से डिविजिबल है, आप डिवाइड कर सकते थे 8 से इसको. हाउ मच इज दिस? 8 6 या 48 होता है, फिर 3 आएगा तो 8 हो जाएगा. दिस इज डिविजिबल बाय 8. एंड नेक्स्ट नंबर भी मैंने लिखा हुआ है दिस वन 1 1 2 5 1 2 5 9 6. चेक दिस नंबर. Check 596. Whether 596 is divisible by 8 or not. You can check it. 5 7 8 7 56 and 3 36. This number 36 is not divisible by 8. So this number is not divisible by 8. आपको करना क्या है? ये लास्ट की जो 3 डिजिट है उसको 8 से डिवाइड करना है. The whole number will be divisible by 8. Now the next rule is divisibility rule of 9. Divisibility rule of 9, the sum of the digits is 9. सम ऑफ द डिजिट्स आपका 9 होना है, उसमें डिवाइड करना ही नहीं है. दिस इज अगेन वेरी वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट. आपको करना क्या है? डिजिट्स का सम करना है, और अगर वो 2 डिजिटल आ जाएगा तो फिर उन डिजिट्स का भी सम करना है. सपोज आपने डिजिट्स का सम किया और 2 डिजिट्स आ गया या 3 डिजिट आ गया 4 डिजिट आ गया, 3 डिजिट तक आ सकता, 3 डिजिट भी आ गया. देन सी लुक हियर, दिस वन 567 मैंने लिखा है 567. इन डिजिट्स को ऐड करो 5 + 6 + 7 कितना हो गया 18. 18 इज 1 + 8 9 आ गया. दिस इज डिविजिबल बाय 9. नेक्स्ट नंबर भी लिखा हुआ है. नेक्स्ट नंबर आप इसे ऐड करो 6 + 9 15 23 15 + 8 23. देन हाउ मच 25 हो गया, और फिर अब आ गया 5. सी एड दिस. ऑलराइट, इनको ऐड करेंगे 6 और 9 15 15 और 23 25 25 में ऐड करेंगे 30. ये आ गया 30. 30 इज 3 + 0 नॉट डिविजिबल बाय 2. दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 2. आपको करना क्या है? सम ऑफ द डिजिट्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं. देखो 1 + 2 + 5 + 9 + 6. इसे ऐड कर दो. इसे ऐड करेंगे तो वेदर दिस इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट आ जाएगा आपका. ये आ जाएगा आपका. हाउ मच इज दिस? दिस इज 23 को फिर से क्या करना है आपने 2 + 3. अगेन यू हैव टू ऐड द डिजिट्स. नाउ चेक वेदर दिस इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट. Yes, 11, the very very important rule of divisibility of 11. Subtract the last digit. अब हम लास्ट डिजिट किसको कहते हैं मैंने कई बार बता दिया, हम यूनिट्स प्लेस वाले डिजिट को लास्ट डिजिट कहते हैं. Subtract the last digit from the remaining leading truncate number and carry on. उसको अगर आपको नहीं आया तो कैरी ऑन करना है लास्ट तक. सी लाइक 286 मैंने लिखा, आप लिखेंगे 28 - 6. बहुत ही सीधा सा है 22. यस 22 इज डिविजिबल बाय 11. अब ये इसमें आप क्या करेंगे 1 4 6 4 -1 कर दो. कितना आ गया 1 4 6 3. अब इसे क्या करोगे 1 4 6 -3 कर दो. कितना आ जाएगा 143. अब 1 4 -3 कितना आ गया 11. दिस इज वेरी वेरी इजी. ये बहुत ही आसान सा और बहुत ही अच्छा रूल है. लास्ट नंबर को आप लास्ट डिजिट को सब्ट्रैक्ट करते जाओ. लेट अस चेक दिस 2 5 7 -4 कितना हो जाएगा 2 5 3. अब 2 5 -3 22. वेरी इजी रूल एंड वेरी स्वीट ऑल्सो. 11 के लिए वन मोर रूल इज देयर. 11 के लिए एक और रूल भी मैं आपको बताती हूँ. ये क्या है? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट the digits in alternate pattern.
ऑल्टरनेट पैटर्न में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर जाओ। लाइक 286 को हम क्या लिख सकते हैं, 286 मीन्स 2 माइनस 8 प्लस 6, कितना आ गया 0। यस, 0 इज डिविजिबल बाय 11। देन नेक्स्ट देखो मैंने लिखा था ये, आप लिखोगे 1 माइनस 4 प्लस 6 माइनस 4 एंड प्लस 1। अल्टरनेट प्लस, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ये भी 0 आ गया, डिविजिबल बाय 11। एंड नेक्स्ट एक और है यहाँ पर, यू विल राइट 2 माइनस 5 प्लस 7 माइनस 4, ये भी 0। तो 11 की डिविजिबिलिटी तो बहुत ही अच्छी है और बहुत ही इजी भी है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। 11, 22, 33 ये नंबर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। 99 तक जाते हैं ना, 99, 999, ये जो नंबर्स होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सो दिस इज द रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, दिस इज अबाउट द फर्स्ट पार्ट। आई विल गिव यू सम असाइनमेंट हियर, you will check whether the numbers are divisible by any of the numbers to up to from 2 to 11. Let me give the assignment. Here is the assignment for you. You have to check the divisibility of 3, 5, 7, 8 and 11. You have to check whether the number is divisible by 3, 5, 7, 8 or 11. These are the problems. I have written the numbers. Please check these numbers and find out your answers.